Welcome, everyone. I hope I'm audible to all of you. Perfect. That's the energy I'm looking for. So today's topic is ecosystem. You must have heard about that, right? Maybe in your Moodle, you must have seen that. Ecosystem of Hadoop, which is a very, very old topic. However, it builds your concept and there is a lot to practice. Like we did single node cluster and multi-node cluster, and we deployed application in the cloud environment. So these are all part of your job actually. However, we are heading towards Kubernetes. That is not so easy. Before we reach there, we need to practice. We need to understand what is this modern ETL and ELT and what is all this all about. So we need to know about that. So I wanted to convert this into a Hadoop 2 environment. This ecosystem session, actually, I wanted to convert into Hadoop 2 environment, but I have still kept it in Hadoop 1 because most people, they do not practice. And there is a lot in Hadoop 2 for you to do. So there is nothing to worry about that. I need a single node cluster in order to begin my session. So let's give a name, single node cluster. And that's it. We need a key. So we do have this key in this particular. So far existing is concerned. So let's go with default, no issues. Okay. Perfect, perfect. See, AWS is improving day by day, they are improving. Now, to connect that machine and keep it private, I actually want to keep it private. So I will need a Windows server. Okay. Windows server. Oh, sorry. Not a Windows server, Windows client. This is a client. You already know that this is a workspace. Okay. So there is nothing much to worry about. And I don't need a key for this. However, I don't need a micro instance. Otherwise it will work like it will be very slow, which we don't want. So I'm putting this also in a default group. Later on, we'll see how to change that. Okay. Ecosystem is a little hectic topic, honestly speaking. And if somebody wants it to make it easy, it is actually easy once you practice. Okay. There are tougher topics that are coming. Don't worry. But to reach there, we need to complete this. You have to practice. That's how it is. So in order to connect, I will need to check the rules. Are they good enough? So I have RDP with my IP and all traffic is good. Perfect. So that will work. Okay, I captured this IP. Let's connect. Oh, I think I have not shared the desktop, right? So here I am sharing the desktop. Now let's go. Administrator, Manchester 1. Hope this is correct. Perfect. Okay. Oh, I already did a new experience. See? They don't have that any other option. See? They don't have any other option now. They're just given that button.
Okay, so I am supposed to connect first to my, you can see web server and CM over here, right? Because it's coming very soon. We'll do the CDH first, then we'll jump to CDP. However, we will first finish it off. So let me check if we have the key loaded. Now we do. This machine is Ubuntu. And IP address is from here. So I'm taking the private IP address. Now you know why I'm taking a private IP address. Okay. See, if I actually, it's my wish. Okay, I should put this particular session in the initial days. But I tried that. Nobody understood anything. So I realized, okay, let's finish all the topics, which are basics, essentials, and then begin with this. So it will take at least one more month, but the results are very good. So, okay, just give single node cluster as a name. Appearance also has to be changed. Otherwise, we have to change this again and again. So once we do it, you don't have to do this again and again. Window ka jalwa. Okay, save, open. Perfect. It is now out of warranty. AWS has already sent me a mail that we are not going to support your Windows machine. But any which ways I'm using as a client, so I have nothing to worry. Is there any workload on that? No. So it's okay. So that's how we think. Okay, JPS start hyphen all. Actually, SSH local host. See, I knew that. So copy and paste. Okay, now we are starting start hyphen all. So the first thing, if I ask you, did we deploy the cluster? So the reality, in reality, this is just installation of a cluster. Deployment, no, it is not yet deployed because there is a lot that goes for a cluster. You will come to know gradually. Okay, we will do that in coming sessions. But let's find out. We have data node, job tracker, secondary name node, task tracker. Perfect. So the cluster is up and running. So let's have access to this cluster from, oh, I may have to update my Chrome. If config, this is the IP address I need. Okay. See, I am habitual for 7.1. So 5.0.0.7.0. Browse the file system. Perfect. Now you can see. Okay. So we have the cluster ready. We are able to access the cluster. We are able to look at the cluster on web UI as well. Okay. Now the question is, what is the first thing we should do in ecosystem, right? So let me check. I think
from here, applications, and then, okay, all bhangar over here, man. See? Oh, yes. Recents. I see there is one file. Okay, so the first step is installation of a cluster, which we have ready. We're not wasting any time here. Okay, second is map reduce. Okay. Third is Hive. Okay, and data analysis in Hive. Then Pig. Okay, and then Flume. Now, because you're fresh, okay, you're not tired. So what we'll do is we'll go with this part first. Now, because I already updated this particular machine, that's the reason I have a cluster ready. So I can skip this. Second is I need to download Flume. Okay. What I need to do is download Flume. So this link is working. I am so happy about it, because otherwise we would have to go and get the link from apache.org. देखो Hadoop तुमने डाउनलोड किया था, उसके बाद Hadoop को untar किया था, है ना, untar. बस इसको भी मैंने Flume को डाउनलोड किया, untar किया. अब एक स्टेप है जो मैं नहीं कर रहा हूं, and that step is I am not moving this particular file. Which file? This particular file or folder, you can call it folder. Yes, I am not moving this folder to USR. Then the question arises, now why not? That's a good question that you're asking. So the answer is very simple. Let's go to Zoom. Kidhar gaya? Hide. My God. New share. Yes. See? Perfect. See, in reality, this is going to be your cluster. Okay. So this is the rack 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There will be 20. Okay. 20 ka rack. So all the servers are in this rack. However, your Flume is not supposed to be in this rack because this is your cluster. Flume is supposed to be out of the cluster. So your Flume agent gateway, okay, gateway को हम लोग बाद में देखेंगे. NAT gateway and cluster का gateway वो सब अलग बात की बात है. But for now, let's not confuse, because that is the next step. We'll stick to this one. तो Flume किधर है? बाहर है, अंदर है cluster के? It is out. Because it is out and I have a single node cluster. So what I'm doing is, this is my home and sorry, this is my root and this is my USR. तो अगर मैंने एप्लीकेशन को यहां पे डाल दिया Flume, okay, Hadoop, what does that mean? That actually means I am putting Flume inside this cluster, which is not going to happen in the real scenario. Now, in order to keep it out, I am skipping this and putting this here in Ubuntu home. When it is in Ubuntu home, it is as good as not in the cluster. So मैंने move करने की मुझको जरूरत है क्या? नहीं है. अच्छा, क्यों नहीं है? Because Flume का जो agent होगा, in reality, multiple होगा. Say for example,
इवन इफ यू हैव काफका, आगे जाके काफका आएगा, तो ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, फिर काफका वगैरह सब समझना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज दैट इज वेरी इजी आफ्टर दिस. If you jump directly over there, it becomes pain in the wrong place. So all your data is coming here. Okay, all types of data is coming here, and Flume agent is responsible to throw that data on the cluster. Yeah, of course, that is in the random fashion, which will come to the theory part little later, but this is how Flume is going to throw that data over here. तो Flume को बाहर रहना जरूरी है. Definitely. There is one reason why. Because this data which is flowing inside the cluster has to be authenticated, isn't it? Has to be authorized, has to be audited, and only then it is going to move there. So that is important, isn't it? Now let's come back. तो move का वो जो reason था वो हमको समझ में आ गया. Okay, what is the reason? So we have done that. Okay. See, we have not moved. Sorry, we have not moved, isn't it? So if I ask where is Hadoop, it tells me where is Hadoop. However, if I ask where is Flume, it doesn't. Why? To achieve that, just to achieve that. Outside and inside wala funda. So ये वाली बात समझ में आ गई. So now let's go to the configuration folder of Flume. तो पहले folder का नाम Apache से start होता है. See? And then it is conf. So there are some configuration files. We are interested in this particular template. So we need to rename this template, okay? So I'm going to rename that template. Now, in order to rename the template, of course, command to मैं move वाला use करूँगा. Getting the point? Command मैं कौन सा use करूँगा? वही use करूँगा, move वाला. Okay. So यहाँ पे कुछ लोग जो practice नहीं करते ना, वो confuse हो जाते हैं. अरे move किया ना, भाई वो खाली template को, ये जो template है ना, इसका नाम change किया. That's it. So take care over there. Okay, now I want to configure that file. Like we configure Hadoop. Similarly, I want to configure flume.sh. Okay. Sorry, flume environment.sh. A flume environment.sh mein, as usual, we are going to throw the class path. As usual. लेकिन यहाँ पे एक खास बात है जो तुमको देखनी है. That is, when you look at this library, I am using the star, isn't it? तो मैंने एक पाथ जो है ना, देखो होम वाला पाथ दिया हुआ है. यूएसआर पाथ है कि यूएसआर लोकल हडूप? नो, इट इज होम अबंतु अपाची ब्ला ब्ला ब्ला. क्योंकि देखो, अगर मुझको दूसरा मशीन चाहिए, तुमने अगर स्क्रिप्ट भी देखा होगा ना, नोटिस किया होगा. से सपोज यू नोटिस द स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है अपडेट एंड अपग्रेड. व्हाई अपडेट अपग्रेड की क्या जरूरत पड़ी? बिकॉज you are supposed to configure a separate machine for Flume. I am showing you Flume also in the same machine. That's the beauty of Linux, not Flume. Remember this. That is the beauty of Linux. Okay, you can do a lot of things in the training environment, in the staging environment. अभी जो हमारा environment है, ये staging plus training है. POC भी ऐसे ही होती है. Okay, however, आगे के topics easy हो जाते हैं इससे. So now the question is, let's go to this particular library. Okay, let's go to this library. पहले तो मैंने ये JDK किधर है वो बता दिया इसको, और इसको बता दिया कि तुझको जो jar files लगेगी वो एक library में क्या है, रखी हुई है. And I want to get into that library. So यहाँ से जाएंगे ना हम लोग. Okay, Apache bin lib, ये है library. PWT. If the address is incorrect, previous वाला, इस चक्कर में वो भी देख लिया जाए.
ओके, माय मिस्टेक। ठीक है, एड्रेस करेक्ट था, सिर्फ मैं जज्बात में था। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, आई हैव सो मेनी jar files. Who has given these jar files? तो ये एक अच्छा सवाल है देखा जाए तो। जो ओपन सोर्स कम्युनिटी वाले हैं ना, उन लोगों ने दिया हुआ है। और क्योंकि हम इसमें कोई एक पर्टिकुलर फाइल ढूंढ नहीं रहे, दैट्स द रीजन आई डोंट वांट टू लुक फॉर अ पर्टिकुलर फाइल। ओके, बट जस्ट हैव अ लुक एट सम टाइप ऑफ नेम्स लाइक टीका, guava, then guava, and god knows makito, and god knows what name they have. Okay, so ये डेवलपर सब मूड वाले रहते हैं, एकदम मूड में काम करने वाले। दे लव टेक्नोलॉजीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। एक पार्ट हमारा समझ में आ गया कि हमने कॉन्फ़िगरेट क्या किया है, environment.sh for the Flume. So Flume knows where is Java, isn't it? Flume knows. Okay, now let's come back. अब ये जो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, nanoflume.conf, okay, it is supposed to be in the configuration folder. Okay, however, let's go to the conf folder, conf, and then open, create a file. We are actually creating a file over here. ऐसा क्यों? Why are we creating a file? Because it is written in the guide of Apache Flume to do that. That's the reason we are doing that. Now the question is, we have a Flume agent. इसके अंदर देखो agent का जो नाम है ना, वो cloud agent। क्या मतलब होता है? You can change it. अब इसमें तीन चीजें हैं, three things: sources, channels, and sync. Sources, channel, and sync. तो पहला तो ये यहाँ पे जो सोर्सेज है, ये इवेंट लॉग एक है कि नहीं? मतलब ये बोल रहे हैं एक फाइल होगी जिसका नाम होगा इवेंट लॉग, और इसको मैं फाइल के चैनल से लाऊंगा। दैट मीन्स देयर इज वन मोर चैनल, एंड दैट चैनल इज मेमोरी चैनल। तो व्हाट इज द डिफरेंस? मेमोरी चैनल एंड फाइल चैनल। इन द मेमोरी चैनल you will get the speed. In file channel you will get the durability. ओ सुना होगा ना तुमने volatile non volatile वाली बात, बस वही है। So we are looking for what in this case? We are looking for durability. If somebody wants durability as well as speed, then you will have to use two channels. So you tell me, if when I'm using two channels, which channel should be the first, file or memory? Memory should be first, है ना? Common sense, very nice. क्योंकि मेमोरी फास्ट होती है, वो पहले मेमोरी पे जमा करता रहेगा और साथ में हार्ड ड्राइव पे लिखता रहेगा। तो समझो लाइट चली गई, हाँ मतलब ऐसे ही मशीन की लाइट चली गई, पावर फेलियर in case. So what will be the loss? The loss that is on the memory, not on the. तो इसके लिए इसका HA भी क्रिएट करना पड़ेगा ना? यस, वो सब हम लोग आगे देखेंगे काफका केस में कैसे क्रिएट होता है। Forget about that right now. But for now, you are supposed to understand कि फाइल चैनल कुछ तो होता है। अभी मेरे को मालूम नहीं क्या है, हार्ड ड्राइव पे कैसे लिखने वाला है, अभी अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बट मैं सब बस सुनते जा रहा हूँ। मजबूरी है मेरी, मैंने पैसे भरे इधर, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। अभी टेंशन मत लो, मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। सिंक टू HDFS। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको है ना प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओके, प्रैक्टिकली देख लेने का मतलब ये है, सपोज सपोज अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये काम खत्म हो जाए मेरा। ओके, एंड देन वी विल टॉक। ओके, कीबोर्ड गलत जगह रखा हुआ है। ओके, परफेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड दिस,
what you need to do, let me share this first with you. Perfect. This looks good. Say, you do have a cluster. This is your cluster. Okay. Application. अब तो ये बात बहुत जल्दी समझ में आनी चाहिए. हमारा ये वाला सेशन. Okay. Application is actually connected. Okay. It is connected to customers. When I say that, I am telling you indirectly, that there is some database also. But when I am saying application is connected to users, so I am telling you indirectly that it is connected to a database which is low cost. So this can be RDBMS, and this can be NoSQL. However, कुछ भी कर लो, ये जो RDBMS है ना, इसके logs और ये जो NoSQL है इसके logs, और ये जो एप्लीकेशन है इसके logs, और ये सब जिस नेटवर्क पे चल रहा है, नेटवर्क, उसके logs कहाँ जाएंगे? Where will all this go? So what we do, we collect all of these logs in some one machine. Okay, कोई एक लिनक्स के मशीन पे इसको कलेक्ट करते हैं. लिनक्स. अब ये जमा हो गया इधर, और उसका नाम क्या रखना पड़ेगा जहां पे उसको जमा करना है? कुछ नाम रखना पड़ेगा ना. तो हमने उसका नाम रखा है इवेंट लॉग. नाम अच्छा लगा? हाँ, क्योंकि इवेंट है ना ये. सी, तो ये लॉग्स यहाँ पे जमा हो गए. इवेंट लॉग. इफ यू वांट इवेंट लॉग, डॉट लॉग, ऐसा भी तुम नाम रख सकते हो. लिनक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता है डॉट लगाने से. इट डजंट अंडरस्टैंड दैट. ओके, वेरी स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. हाउएवर, हमारे काम की बात कि अब ये जो एप्लीकेशन है, सपोज this application belongs to company like ICICI, suppose, and the data which we are trying to fetch, ये logs जो है ना, ये 44,000 ATM का log है. इसको अगर और बढ़ाना है तुमको, तो ऐसा बढ़ाओ, प्लस इंटरनेट यूजर. ठीक है ना? So some users, they just come, they take that pauti and they go home. They don't take the money. So they are called users. And the moment they come and they take the money, they are called customers. Transaction हो गया ना? Up customer. Okay. So इसका जो ये डेटा है 44,000 प्लस ये इंटरनेट यूजर का कम से कम कुछ नहीं तो आई थिंक सो समवेयर अराउंड 6 lakhs. ज्यादा भी हो सकता है, मैं तो ऐसे ही तुक्का लगा रहा हूँ. ओके, 6 lakhs यूजर्स, और यहाँ पे 1 लाख होगा. ओके, 1 lakhs, क्योंकि इंटरनेट यूजर है ना इधर, इसके लिए यूजर लिखा है. तो ज्यादा करके ब्राउजिंग करते थोड़ा परेशान होते, पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड बोल के छोड़ देते उसका पीछे. लेकिन आया तो लॉग जनरेट हो गया ना तेरा, तूने हमको टच किया, लॉग जनरेट हो गया. ओके, या यूजर एक्टिविटी, वेरी नाइस. सी सतीश इज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फॉर योर एक्टिविटी. उसको क्लिक स्ट्रीम डेटा भी बोलते हैं व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट. ओके, all of this log has to be collected somewhere. We are collecting it here on Linux machine. इतनी बात समझ में आ गई? Now I'm changing the color. See, your job is to take from this Linux. So you will use a Flume agent. वो क्या करेगा? ये Linux machine से उठाएगा इसको
और क्लस्टर पे फेंकेगा। तो एक क्वेश्चन है, ऐसा क्यों करेगा वो, या तुम ऐसा क्यों करोगे, या कंपनी ऐसा क्यों करेगी? व्हाई, यू टेल मी। फॉर एनालिटिक्स, फॉर एक्सट्रैक्शन, उसका एक रीजन है। तुम्हारा ये जो हार्ड ड्राइव है ना इधर का, लिनक्स का, इसका लिमिट क्या है? some limit, right? Depends from company to company. So they will have somewhere around, वो डिपेंड करता है कितना प्रोसेसर है, कितना क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, वट एवर इट इज समवेयर अराउंड 8 TB। और मेरे पास जो डेटा अभी जमा हो रहा है 1 2 3 4, isn't it? Then 5 6 7, all of that data, that is going to be not 8 TB, isn't it? It can be somewhere around, maybe it is more than 8 TB, so it is somewhere around, say 96 TB। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आता रहेगा और इधर ये लोड होता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। अच्छा, तो इधर कितना भी आए कुछ फर्क पड़ता है क्या हमको क्लस्टर पे? यू टेल मी। या 8 TB इट वरीज ऑन यूज, करेक्ट। हम लोग ने अभी वो जो ये है ना अपना EXT4, इसकी लिमिट को लिया हुआ है, बोलते हैं 6 हेक्साबाइट का लिमिट है। कंपनी वाले रखते ही नहीं ना इतना डेटा, बिकॉज फिर CPU पावर दिस दैट ऑल कॉस्ट, तो वो हिसाब से हमने लिया है इसको 8 TB। बट हमको उतनी जरूरत भी नहीं है देखा जाए तो। सो वी आर मूविंग दिस डायरेक्टली टू द क्लस्टर, एंड देन इट कैन गो टू, सपोज यहाँ पे 0 लग गया, 960 TB। कुछ फर्क पड़ता है क्या? नॉट एट ऑल। बढ़ने दो, एक 0 और लगा दिया इधर, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। और एक 0, नहीं। It doesn't matter. Getting the point? That's the beauty. Now you understood why, what we do, why we do. Getting the point? Now we have to do this. Okay. अब इसमें ना कुछ और भी चीजें हैं जो एडिशनल है, लेकिन वो थोड़ा रुक के पहले इसको समझ लेते एक पॉइंट को। अब ये वाली पॉइंट समझ में आ गई। So let's go back to our machine. We have configured flume.conf, है ना? इसमें ये क्या लिखा है? सोर्सेज। तो अब तुमको ये समझ में आ गया इवेंट लॉग जो सोर्सेज बोल रहे हैं हम लोग, ये कहाँ है? ये है किसी लिनक्स के मशीन के ऊपर, बराबर, परफेक्ट। तो उसके बाद हमने लिखा है चैनल, मतलब लिनक्स मशीन पे किसी हार्ड ड्राइव पे रखा होगा, रैम पे नहीं रखा होगा। तो यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन है। सपोज रैम पे होता तो इसका मतलब ये होता है दोस्त कि ये एकदम स्ट्रीमिंग डेटा है। सी, रैम पे है इसका मतलब क्या है? डेटा इन मोशन। हार्ड ड्राइव पे इसका मतलब डेटा एट रेस्ट। डेटा एक जगह पे रखा हुआ, ये IBM की भाषा है, ओके, हमारी भाषा नहीं है। हमारा भाषा क्या है? स्ट्रीमिंग डेटा, स्ट्रीमिंग मतलब डेटा इन मोशन। और डेटा एट रेस्ट इज जस्ट डेटा ऑन स्टोरेज, दैट्स हाउ वी से। तो IBM ने सबको समझाने के लिए ऐसा बोला है। सो हमारा काम क्या है? उसको क्या करना है? इस हार्ड ड्राइव से उठाना है और उसको सिंक में लाना है। सिंक, ये वाला सिंक है, वो SYNC वाला सिंक नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन वाला सिंक नहीं है ना? सिंक टू HDFS। तो हमको कहां से उठाना है उसको? लिनक्स मशीन से उठाना, HDFS पे रख देना है, जो अभी हम करेंगे। नाउ एक
एक बात है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत जावा आता है उनको ये बात जल्दी से समझ जाती है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनको थोड़ा सा ये पता होना जरूरी है हमारे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे 3 फंक्शन है, 1 2 and 3. How many functions? 3 functions. So which is the first one? Sources. तो यहाँ sources के बारे में configuration लिखा हुआ है। अच्छा, what is the configuration? तो you don't have to worry about the program. वो जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को jar files दिखाया था ना लाइब्रेरी के अंदर, उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं। उन क्लासेस को ये समझता है कि इसका क्या मतलब होता है, टाइप का मतलब, और कितने टाइप्स अवेलेबल है। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा टाइप क्या है? एग्जीक्यूटेबल। वी आर नॉट डेवलपर्स। ओके, तो एग्जीक्यूटेबल इज व्हाट? अ कमांड। तो कमांड कहां से आएगा? लिनक्स से आएगा, लिनक्स। ओके, कमांड का नाम क्या है? टेल -f। और इस पाथ के ऊपर हम क्या रखने वाले हैं? वो लॉग्स को रखने वाले हैं। जो 8 टेराबाइट का लॉग हमने डिस्कस किया ना, दैट वी आर गोइंग टू स्टोर हियर ऑन इवेंट लॉग डॉट लॉग। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? अब होता यह है कि रात को 4 बजे एटीएम बंद हो जाते हैं। हाँ, वो कॉल सेंटर वाले भी घर पे चले जाते हैं, तो एटीएम में कुछ ज्यादा काम होता नहीं है, जिसकी वजह से 3 बजे 4 बजे 2 बजे, आई डोंट नो, मे बी, आई एम जस्ट assuming, okay, so there will be a timeout after some time, like 20 seconds, 40 seconds, 1 minute, 2 minute, depends from company to company. We don't want that timeout. We want it to restart what? This particular command. वैसे भी -f है ना, -f का मतलब होता है कंटिन्यूस। अब तुम मुझको पूछोगे ना, अरे एफ का सी से होना चाहिए ना, मेरा फॉल्ट है वो डेवलपर ने बनाया उसको। वो कोई फ्रांस का डेवलपर होगा, ढकेल दिया उसने, उसका मतलब होगा कुछ फॉरवर्ड सोचा होगा उसने, गवंडी खोपड़ी जो है। तो उसमें हमारा थोड़ी कुछ फॉल्ट है उसमें। हमको तो मजबूरी है ना, हमको वही यूज करना है जो उसने बेचारे ने बना के दिया है। दैट्स हाउ इट इज। नाउ द क्वेश्चन इज बैच फाइल, सॉरी बैच साइज। बैच का मतलब होता है पोटला। अब पोटला का मतलब मत पूछना प्लीज। मतलब ये होता है कि ये जो हार्ड ड्राइव पे जो डेटा आएगा, ये 1000 का पोटला में आएगा, पैकेट में। तो 1000 में आएगा तो हम 1000 में सिंक करेंगे उसको, isn't it? So बैच वर्ड यूज इसलिए हो रहा है कि बिकॉज देयर इज अ रैम एंड इट इज सिक्वेंशियल। याद रखना इस बात को, इट इज व्हाट? Sequential. That's the reason we are saying batch size. And to show this, I am commenting this. Otherwise, तुमको क्या करना पड़ेगा? Sequential enable करना पड़ेगा। Getting the point? अब तुम सोचोगे ना, अरे मेरे को तो लगता है sequentially आना चाहिए। फिर ये बात समझ में नहीं आई। अरे ये जावा है दोस्त, ये ना फंक्शन टू फंक्शन जंप मारता है। देखो यहाँ सोर्सेज लिखा है, उसके बाद यहाँ चैनल लिखा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? चैनल आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या डाला है? सिंक डाला है जानबूझ के, तुमको ये बताने के लिए कि तुमने डाला कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जंप ऑटोमेटिक किधर मारेगा? चैनल पे मारेगा। चैनल पे नीचे देखो इधर, वो इसके ऊपर जंप मारेगा। इट्स अ फाइल टाइप। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको क्या बोला था कि वो रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब कोई यूज नहीं करेगा तो उसका टाइम आउट होगा, तो हमको उसका चेक पॉइंट करना पड़ेगा कि नहीं? सो दिस इज वेयर वी डू द चेक पॉइंट। नाउ यू विल आस्क व्हाई चेक पॉइंट, क्या फायदा उसका? गुड क्वेश्चन। उसका फायदा ये है कि हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है WFM, वर्कफोर्स मैनेजमेंट। उनको ये डेटा दिया जाता है बताने के लिए कि देख भाई, तेरे को जब भी स्केड्यूल करना है एटीएम का मेंटेनेंस या अंदर पैसे डालने का मेंटेनेंस, तो तू 3 बजे रात को, 4 बजे, 2 बजे स्केड्यूल कर सकता है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो यूसेज। तेरे को सर्वर मेंटेन करना है तो यू कैन डू इट एट दिस टाइम। अब मैंने टाइम जो है ना तुक्का लगाया, आई डोंट नो, इट कैन बी मॉर्निंग 6 o'clock ऑल्सो, इट कैन बी इवनिंग, it actually cannot be evening ever, it has to be at night somewhere,
ओके, तो वो टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका डेटा हमारे पास चेक पॉइंटिंग में आ जाना चाहिए, सो दैट वी कैन शेयर दिस विद वर्कफोर्स मैनेजमेंट टीम। ओके, अब ये वाली बात समझ में आ गई। नाउ बिकॉज वी आर यूजिंग अ फाइल चैनल, वी आर नॉट यूजिंग अ मेमोरी चैनल। देखा तुमने, तो सोर्स जो है वो फाइल चैनल है, तो जो सिंक है वो क्या है, HDFS का, वो भी क्या है, फाइल चैनल ही है। नाउ द क्वेश्चन इज, लेट्स कम बैक। देखो भाई, सोर्स के बाद क्या था, चैनल, तो मैंने जंप मारा चैनल पे जावा की तरह। अब मैं आता हूं वापस से सिंक के ऊपर, तो हमारा सिंक यहीं पे है, उसका नाम क्या है, HDFS सिंक, isn't it? So we are saying कि we are going to keep the data on HDFS। तो अगर मेरा फाइल सिस्टम का नाम ओजोन है, ओजोन है, या इसिलॉन है, या मैपार एफएस है, या EMR FS है, तो डोंट यू थिंक आई विल हैव टू मेक अ चेंज हियर? तो तुम बहुत जल्दी से बोलोगे यस, लेकिन एक प्रॉब्लम है इधर, ठीक है ना? तो जमान का आंसर यस है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो तुमने सोचा नहीं। जैसे ही तुम बोलोगे ना यस, कि अगर यहां पे मैंने ओजोन लिख दिया, मैपार FS लिख दिया, EMR FS लिख दिया, या इसी लॉन लिख दिया, जो भी फाइल सिस्टम है, ओके, तो उसका जो क्लास फाइल है, क्लास फाइल लाइब्रेरी में किसको देना पड़ेगा डाल के, उनको देना पड़ेगा जिनका फाइल सिस्टम है। तो अगर मैंने इसी लॉन यूज किया तो कौन देगा मुझको फाइल, ओ सॉरी, लाइब्रेरी कौन देगा, EMC स्क्वायर, वेरी नाइस। अच्छा चलो, वो गूगल का फाइल सिस्टम है, तो कौन देगा, गूगल देगा। तो वहां पे है ना, कभी अपना भेजा, यू डोंट हैव टू रैक योर ब्रेन्स ओवर देयर अननेसेसरीली, you straightforwardly tell the director or whoever your manager, भैया इसकी जार फाइल जब तक मिलेगी नहीं, काम आगे बढ़ने वाला नहीं, फिनिश, योर जॉब इज डन। हाँ, नहीं तो लोग क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग खुद करने को बैठते सब कुछ, एड़े चाले। नेवर एवर डू दैट मिस्टेक, सो दैट इज द टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ कम्स योर फाइल टाइप, डेटा स्ट्रीम। ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड द स्ट्रीम का मतलब होता है डेटा कंटिन्यूसली आता रहेगा, और कंटिन्यूसली देखो क्या रखना पड़ेगा, सिंक के ऊपर रखना पड़ेगा। We have understood that component. Perfect. यहाँ पे एक गड़बड़ दिख रही है ना, सी, इधर एक एंटर की जरूरत है। माय गॉड, यस, ओके, दिस इज योर पाथ। किस चीज का पाथ है ये, जहां पे सिंक करेंगे ना हम लोग, तो उसको रखना कहाँ है, तो हम रखेंगे USER Ubuntu Flume Events। दिस इज ओनली पॉसिबल ऑन HDFS, करेक्ट? दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू डू इट। ओके, तो वहां जब रखेंगे ना, तो स्टार्टिंग में प्रीफिक्स क्या डालेंगे, उसका इवेंट लॉग हम नहीं डालेंगे, वो ऑटोमेटिक डालेगा। सफिक्स क्या होगा उसका, डॉट लॉग, फॉर अस टू अंडरस्टैंड। यार बैच साइज क्या होगा, 1000, वाई कमिंग 1000, तो तुम चाहो तो उसको 10,000 1 लाख करके देख सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन। ओके, सो आई एम सेविंग सफिक्स, मतलब देखो, प्रीफिक्स स्टार्टिंग, सफिक्स एंडिंग। ओके, अब वो दिखता कैसे, वो थोड़ी देर में तुमको देखने मिलेगा। ओके, ये पार्ट समझ में आया, समझ में एक्चुअली नहीं आया, आई नो, लेकिन अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, रिलैक्स। एक क्वेश्चन है, ओ आई स्टिल, नाउ यू कैन सी द स्क्रिप्ट। सी यहाँ पे है ना, हमने इसको बोला है वार लॉग फ्लूम डेटा, बराबर है, तो वो वादा हमने जो किया है वो पूरा करना पड़ेगा, यस। चेक पॉइंट यहाँ पे बोला है, देखो, वो वादा भी पूरा करना पड़ेगा, और ये फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फटाफट बना देंगे, क्योंकि जो वादा किया वो पूरा करना पड़ेगा। तो मैंने अभी जो फोल्डर बनाया है ये वाला, you tell me, people those who are not giving the answers, okay, I don't want repeat answers, I want people those who are not attempted the answer, only them to give the answer.
यू टेल मी कि अब मैंने ये जो फोल्डर्स बनाया ये क्लस्टर पे बना या नहीं बना, यस और नो? तो मान ले तुम लोग तो गाना गा रहे, यस नो यस नो यस नो नो यस यस नो 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 यस, ये तो गाना हो गया कोई। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इफ आई मेक इट ऑन द क्लस्टर इट विल बी, कैन आई यूज सूडो? नो, नॉट एट ऑल, क्लस्टर पे सूडो आई कैन नॉट यूज, पहली बात। नंबर टू, MKDIR, सो मेरा क्लाइंट कौन है? लिनक्स, तो कहां बना रहा हूं मैं? लिनक्स के ऊपर बना रहा हूं, इजंट इट? इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वादा, सी द वादा इज हियर। आई टोल्ड के HDFS के ऊपर हमारे पास ये पाथ होगा, ओके okay? जहां पे हमको क्या डेटा रखना है, तो पाथ बनाना पड़ेगा ना। अब मैं जो ये बना रहा हूं, ये मैं कहां बना रहा हूं? क्लस्टर के ऊपर बना रहा हूं, है ना? सी व्हाई? बिकॉज माय क्लाइंट इज Hadoop दिस टाइम। अब लॉजिक समझ में आया? वेरी नाइस, बड़े अफसोस की बात है। ओके, नाउ आई नीड दैट एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? I need that application which is required for me to send data. तो मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया पाइथन का। अब ये जानबूझ के मैंने ऐसे ही रखा है ताकि मैं तुमको दिखा सकूं कि डेवऑप्स किसको बोलते हैं। प्रोडक्शन में डेवऑप्स का मतलब क्या होता है? डेवऑप्स का मतलब होता है कि अब मैंने एक प्रोग्राम डाउनलोड किया, ओके, और मैं अब उस प्रोग्राम को ओपन किया, आई स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट हियर, या फर्स्ट टाइम तुमको पढ़ के समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, बट मेनी अ टाइम्स दिस इज ऑल रेडी। माइनर चेंजेस दैट यू हैव टू मेक विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक दिस। सी, यहाँ पे क्या लिखा है? वार लॉग, और हमने वादा क्या किया था? फ्लूम का, फ्लूम /event log, और उसके बाद डेमो बोला था क्या? नहीं। सो लेट्स रिमूव डेमो। अब ये करेक्ट हो गया। सी, फ्लूम, ओ, / हो गया, डेवऑप्स खत्म। मतलब खत्म नहीं हुआ, मतलब बता रहा हूँ इस तरीके के काम होते हैं जिसमें किसी का काम होता है जिसमें हमको थोड़ा मोटा एडिट करना पड़ता है, दैट्स इट। लेकिन किसी पक्के डेवलपर ने उसको बनाया रहता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो आई हैव वन फाइल, एप्लीकेशन फाइल, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फायरिंग दैट फाइल, ओके। अब इसमें चलती कि नहीं मालूम नहीं, बट लेट्स सी। पाइथन, ओह इसमें पाइथन 3 है, तो डेफिनेटली नहीं चलेगी। sudo apt install पाइथन। मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, सॉरी इंटरनेट, है ना? आई विल नीड टू चेक, ये कनेक्शन का इशू। ओ ये चालू है, भगा दिया उसको मैंने, ठीक है। वाई लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एंटर मारना चाहिए था। वाई इज कैपिटल, दैट मीन्स इट इज डिफॉल्ट, बट वो अपना ह्यूमन टेंडेंसी। आदत से मजबूर, ओके। सो नाउ वी हैव द, क्या है ना, ये पाइथन का जो वर्जन है, ये पाइथन 2 का पाइथन 2 है। एंड इन लिनक्स पाइथन इज नेटिव। नेटिव का मतलब समझ में आता है ना? बोलते हैं लिनक्स इज बिल्ट अपॉन पाइथन, इतना नेटिव है, ओके। तो नाउ आई एम फायरिंग दिस फाइल, मतलब एक प्रोग्राम है, इसको मैंने चलाया,
किसने बोला परमिशन डिनाई? बड़ी खुशी की बात है ये। sudo python। ओके, अब फाइल चल गई है। जो तुमको दिख नहीं रही है, तुमको क्या दिख रहा है? सिर्फ ये दिख रहा है ना? लेकिन हाँ, तुमको फाइल देखनी है, करेक्ट? आई एग्री विथ यू। सो दिखा देते हैं ना, उसमें क्या है, इतना टेंशन क्यों? सो व्हाट विल डू इज विल गो टू var log। there is one more way through which we are going to look at, but पहले बच्चों वाला तरीका देख लेते हैं हम लोग। ओके, यहां पे आ गए। अब cat event log। हाँ, चलो थोड़ा आराम तो मिला। ओ, आराम खत्म। नाउ सी, some people are thinking about error, है ना? वहां पे एरर के साथ सक्सेस भी था। अगर मैंने इसको बोला हेड, ओके, बट बिफोर वी से हेड और टेल वॉट एवर इट इज, what we'll do is we'll do this little differently. So I'm taking you back to this. You remember this tail, है ना? I'm copying this and pasting it here. देखा तुमने? I'm hitting enter. अब ये क्या कर रही है? ये जो मेरा कमांड है ना, कमांड लिनक्स के इन्वायरमेंट में ये इस फाइल को रीड कर रहा है, करेक्ट? बट अब किसी ने एटीएम में कार्ड डाला तो क्या होगा? तो ये तुमको स्पीड में भागता हुआ दिखेगा, isn't it? तो मुझको एटीएम में कार्ड डालने के लिए क्या लगेगा? डुप्लीकेट सेशन, ऐसा। ओके, so what I'm doing is, yeah, this is good. sudo python। अब मैंने एप्लीकेशन को रन किया, दैट मींस एटीएम में बहुत सारे लोग कार्ड डालना शुरू करेंगे। तो देखो, दिख रहा है कुछ, है ना? सक्सेस भी आया, एरर भी आया। ये कुछ लोग है कार्ड उल्टा डालने की एक आदत सी रहती है उनको। तो वो जो उल्टा कार्ड डालते हैं ना, उसको एरर बताता है लॉग के अंदर। और वो वन गो में पैसा निकालने वाले जो रहते हैं ना, सी इट इज स्टिल रनिंग। एक और कार्ड डालते, चलो वापस से थोड़ा और आराम। अब ये जो एप्लीकेशन है ना, ये डेमो एप्लीकेशन है। सपोज तुमको किसी को है ना पीओसी करके दिखाना है, जस्ट टू पुश सम डेटा, तो यू नीड एन एप्लीकेशन। तो तुम बोलोगे डोंट वरी अबाउट दैट, आई हैव एन एप्लीकेशन। इसी तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट भी लेते हैं। उनको बोलता है वी हैव द एप्लीकेशन, आई विल रन द एप्लीकेशन, यू विल सी दैट डेटा इज गेटिंग पुश्ड। और ये जो डेट टाइम तुम देख रहे हो, ये आईपी एड्रेस डेट टाइम, ओके, इसमें जो डेट है ये करेक्ट है, ओके, आईपी एड्रेस सब क्रिएटेड है बाय द स्क्रिप्ट, ओके, सब ऑटोमेटिक। अब ये ग्लोबल डेटा दिखा रहा है वो तुमको कि कहाँ कहाँ एटीएम डाला और उसका एरर आया और ब्ला ब्ला ब्ला। हाउएवर, अब एक सवाल है, is this data on the Linux machine or is it on the cluster? Tell me. So let me refresh this. First, let me refresh user, Ubuntu, Flume, events. So everybody who's saying Linux is absolutely right, isn't it? Because it is in the Linux machine. हमको टास्क क्या दिया है कंपनी ने?
तुमको लिनक्स मशीन से उसको कहाँ लाना है? HDFS पे लाना है, क्लस्टर पे लाना है। ओके, सो लेट्स डू इट। तो अब इतना तो तुमको समझ में आ गया कि मशीन पे, लिनक्स मशीन पे आना शुरू हो गया है। अब हमको उसको क्या करना है? क्लस्टर पे लाना है। दैट्स इट, एंड आवर जॉब इज डन। सो उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू रन द एजेंट। क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू रन द एजेंट। इस सिस्टम में ऐसा चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है 1947 का सिस्टम है ये। ओह माय गॉड, सी माय किड्स व्हेन दे डोंट वांट टू डू होमवर्क ना, तो उनको एक बहाना मिलता है, इंटरनेट स्लो है। मतलब ये जनरेशन ऐसा है कि इंटरनेट स्लो है तो होमवर्क भी नहीं करने का हमको। ओके, नाउ सी, आई एम आस्किंग फ्लूम एनजी। अब ये एनजी इधर नहीं है, तो ये चलने वाला नहीं है कमांड, आई नो, डोंट वरी। फ्लूम एनजी एजेंट कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर इज दिस वन, यहाँ पे उसका एफ यहाँ छुपा हुआ है ना। और उसको मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज दिस वन, उसका पाथ, and the name of the agent is Cloud Edge, which you can change if you want to. Okay, now the question is Apache bin folder के अंदर हमको क्या करना है? इस एजेंट को फायर करना है। तो दिस इज वेयर, oh copy, see, so now I'm running the agent. अब जब एजेंट चला रहा हूं तो तुमको ये जार फाइल्स दिख रही कि नहीं? ये देखो, Jasper runtime, jar and JSON and God knows what भंगार कचरा सब पूरा गवंडी लोग ने जो बनाया है सब। See, so many, my God. So now the agent is running. So what I'll do is I'll come back here. Okay. Oh, I'm refreshing. Huh? Refresh. So यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, isn't it? So what we'll do is we'll come back here, up arrow, sudo python. Yeah, that means there is something wrong with the path. Okay. User Ubuntu Flume events. So we will need to go back in the configuration folder. Okay, क्या नाम था उसका? No, flume.conf. User Ubuntu Flume events. Path looks, यार ये इतना स्लो क्यों है? No, don't worry about the port number. मेरा जावा कौन सा है वो देखना पड़ेगा मुझको, है ना? जावा
Hmm. Okay. Wait, let me check. CD user. सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है यार. ओके, लेट्स चेक किधर गड़बड़ किया. I fired all this, right? Yes, I did. हाँ, नेटवर्क तो मेरा मेरा भी बहुत, मुझको लग रहा है मेरा ही नेटवर्क स्लो है, लेकिन उससे इसका कोई लेना देना नहीं. It has nothing to do with this. Let's see what is agent telling me. Okay. या शायद वही था. CH मोड का इशू था शायद. We didn't fire. Perfect. Okay, now we will run this Python wala. Sudo Python generate. अरे यार ये बहुत सता रहा है. परफेक्ट. ये देखो ये जो है ना स्लो होता जा रहा है इधर. ओके, क्रोम को भी अपडेट करना पड़ेगा लगता है. बट नाउ डेटा इज कमिंग इन. जैसे जैसे कोई लॉग लॉ वो करेगा ना ATM में, तो all that data will be synchronized here on this HDFS. See, it is getting slower and slower for me. Yeah, you have to look at the right hand पे. ये जो है ना छोटा सा ये कितना छोटा हो गया वो देखो, because I have to scroll to go down. So when you practice, you will get to see this. So now we have moved the data from that Linux to HDFS.
इसको अपडेट कर दिया जाए। विंडोज कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है यार। इधर इसका अपडेट का ऑप्शन, बट इट्स ओके। तो एक पॉइंट अपना समझ में आ गया अपने को। नाउ व्हाट विल डू इज we'll bring the Twitter data. See, क्योंकि फ्लूम किया ना भी, तो ट्विटर का डेटा लाना भी मुश्किल काम नहीं है। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। एंड सो फार दिस ब्लॉक साइज एंड एमबी का जो है ना, ये सब हम लोग बाद में हडूप 2 के बाद हम लोग निपटेंगे इसको। ऑल थियरीज विल बी कवर्ड इन दैट पार्ट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे उसका कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज ऑल आउटडेटेड 64 MB वगैरह। ओके, दिस इज आउटडेटेड। एंड आई थिंक मेरा इंटरनेट का भी इशू हो सकता है। ब्राउजर बहुत स्लो चल रहा है। See, clicking, but it's not responding. Okay, what we'll do is we'll go with Twitter data quickly. अब मेरा एक एजेंट यहाँ पे चालू है। I am keeping this agent running. I'm not stopping that agent. Which means whenever, if I want, I can push more data because मेरा जो एप्लीकेशन है वो रियल में CI/CD पाइपलाइन नहीं है, isn't it? So इसीलिए मुझको एप्लीकेशन खुद रन करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तुमने लोड बैलेंसर के साथ में एप्लीकेशन जो रन होता है वो तुमने अनंत के सेशन में देखा होगा, isn't it? So that application throws data automatically and we have to capture that data. Analytics का जो department होता है, they have to capture that data and keep it on a cluster. So it can be a cluster, it can be S3, it can be Ozone, it can be Echelon, it can be a lot of other things. Usually 90% companies HDFS पे रखती है क्योंकि सबसे सस्ता है वो. Okay, if you are purely cloud driven, then the options will change, that which will come to that later. But for now, अब क्या था हमारा नेक्स्ट पार्ट? ट्विटर। तो ट्विटर के लिए देखो हमको जो है ना, ओके, सो हमने क्या किया, उसको हमारे S3 पे रख लिया है। सो इफ यू वांट टू डाउनलोड दैट फ्रॉम S3 एनी टाइम यू कैन wget एंड डाउनलोड। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। Okay, let me change this network here. ओके, अभी लेकिन आवाज बराबर आ रही है ना? Perfect. So I was talking about this particular file, .jar file is a Cloudera file created by Cloudera. Okay, not today, 10 years back. So we downloaded that file, we used it for multiple times. ट्विटर का जो डेटा है अभी वो लोग चार्ज करते हैं इसको, तो हमने इसको हमारे S3 पे रखा है। इफ यू नोटिस दिस इज आवर बकेट, ओके, एंड वी कैन डाउनलोड इट बाय डूइंग wget। तो ये जो जार फाइल है, एज वी वर टॉकिंग, हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्टार जो है ना उसको हटाना है। कौन सा स्टार हटाना है?
See this one. Because my last name is Turk, Turk. India is filled with the whole world. Okay, so as you can notice, here we have a star, right? But now we know that for getting the Twitter data, we don't need this. We don't need this. So I am commenting this and coming down for this particular file. अब ये फाइल एक्चुअली हमने इसको मूव नहीं किया लाइब्रेरी में, विच इज पेंडिंग ऑफ कोर्स, बट हमने यहाँ पे environment.sh में पहले ही पेस्ट कर दिया है. Okay, so here you can notice we are not using the star, we are using snapshot.jar. अब मेरा क्वेश्चन है, पहले मैंने जो एजेंट रन किया था, ओके, जो अभी भी रनिंग है, मैंने उसको स्टॉप नहीं किया यहाँ पे. See, this agent is still running. When I will run this agent, अभी क्योंकि माइक्रो इंस्टेंस में इसकी ऐसे ही मरन हो रही है, या आई डोंट नो, इट इज द इंटरनेट कनेक्शन. योर आई वांट योर आंसर. विल माय एजेंट, ये ऊपर का जो एजेंट है, विल इट डाई और विल इट स्टिल बी रनिंग? Still be running, right? See, it will be still running because it is running in the RAM right now. It doesn't know पीछे क्या हुआ. Getting the point? So next time when it comes to read the configuration, it will only get this configuration. So administrators, sometimes they do certain things in the background. They don't update the organization or they don't update their portals, because of which things fail. And they don't realize, अरे कल तो चल रहा था, आज क्या हो गया? तूने वहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, जैसे रीस्टार्ट हुआ तो बंद हो गया. So that is why administrators जो है ना बहुत अलर्ट रखते हैं उनको, जो थोड़े अलर्ट टाइप के होते हैं ना, they are good administrators. You're supposed to be that way. Now, my next step is to throw that file, this jar file जो हमने download किया है ना, we have to throw that file in the libraries folder. Okay, so library का folder is this one. See, and the file is here, snapshot.jar. Okay, so I'm going to move this Flume in this particular library folder. तो हमने उसको move कर दिया है. Okay, that is what was pending. Now the question is, we need to create a folder for Twitter, which I'm not doing purposely. Okay, पहले मैंने किया था, अब नहीं कर रहा हूँ. I'll let you know why. तो पहले मैंने flume.conf बनाया था, अभी twitter.conf बना रहा हूँ. ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो जार फाइल है ना, इसके क्लास फाइल में ऐसा लिखा है. हमने थोड़ा सा इसको चेंज करने का कोशिश किया था. यस, बट देयर आर 200 क्लासेस इन दिस वन जार फाइल. वो देख के हमारे हाथ पैर कांपने लग गए, उसके बाद हमने उसका पीछा छोड़ दिया. तो लेट्स कम बैक हियर. Okay, this is supposed to go in the .conf folder. Okay, now let's understand this quickly. Sources, channel, and sync. Up this time, sources is not event, it is Twitter. Memory channel, HDFS. तो इतना तो मालूम ही है हमको already. Now this is the class file created by that snapshot.jar जो है ना, Cloudera का जो creation है, उन लोगों ने बना के रखा है. तो we don't have to worry about that. And मेमोरी चैनल के ऊपर ये, क्योंकि ट्विटर का जो डेटा होता है वो क्या होता है, जो फोकटिए होते हैं पूरे इंडिया के फोकटिए, वो सब क्या करते हैं, बैठे होते हैं ट्विटर के ऊपर, है ना, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं, काम धंधा होता नहीं, और वो ट्वीट जो है मिलियंस में हो जाता है वो. दिस इज हाउ इट इज. एंड सम पीपल दे आर मेकिंग बिग मनी विथ ट्विटर, लाइक एलन मस्क. ही इज मेकिंग बिग मनी. नाउ व्हाट वी नीड इज, वी नीड टू एक्सेस दिस ट्विटर. ट्विटर किसका है? थर्ड पार्टी है ना.
अरे भैया देखो, एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो रह गया। हमने पहले जो कॉन्फ़िगरेशन किया था, ये जो एजेंट हमने रन किया, ये वाला नीचे, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, याद रखना। दिस इज फर्स्ट पार्टी, हमारा खुद का एप्लीकेशन है, हमारे खुद के कंट्रोल में। अभी जो हम लोग डेटा फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसका है? ट्विटर का है। ट्विटर किसका एप्लीकेशन है? कोई कंपनी का एप्लीकेशन है, ओके, विच राइट नाउ वी डोंट, आई डोंट नो, बट हमारे लिए वो एक थर्ड पार्टी है। तो बिकॉज इट इज थर्ड पार्टी, टू एक्सेस देयर नेटवर्क, सी मैंने उनका सर्वर नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? नेटवर्क। टू एक्सेस देयर नेटवर्क, सी नॉट टू एक्सेस देयर सर्वर। एक्सेस सर्वर का तो वो लोग देने वाले नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अपने नेटवर्क का एक्सेस देने के लिए क्या दिया है तुमको? कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट की, एक्सेस टोकन एंड एक्सेस टोकन सीक्रेट यहां पे दिया हुआ है। आफ्टर दैट यू कैन एक्चुअली चेंज द कीवर्ड्स। ये जो कीवर्ड्स है ना, यू कैन चेंज इट। अब हमारे केस में हदूप, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल दिस वर्ड्स आर देयर, ओके, बिकॉज ये हमारा डोमेन का वर्ड्स है। In your case, you can change it. Go to Google Trends, find out what is the trend right now, like football or Katrina, whatever it is. Put that words over there, and you will see the tweets are moving so fast. हाँ यार, moving so fast. उस पर याद आया कि सही बात है ये तो. What we'll do is we'll go back here, because even I want it to move fast. Google Trends. फोकटिये क्या कर रहे हैं वो देखने आए हम इधर. All फोकटियाज अराउंड द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया. फोकटिये बहुत है, बहुत, मतलब भरा पड़ा, दुनिया भरी पड़ी है. मतलब पैसा वाला बनना बहुत आसान काम है. जब तक फोकटिये जिंदा रहेंगे, हम गरीब नहीं हो सकते. इम्पॉसिबल. दैट्स व्हाट इट मीन्स. सो किधर गया इसका? ओके, ट्रेंडिंग सर्चेस. आ ये तो अपना देसी सर्च है ना. वर्ल्ड वाइड किधर है यार? चलो ठीक है, इसी से काम चलाएंगे. क्या बात है, क्या इंटरेस्ट है पब्लिक के. चलो, हॉटस्टार इतना आगे मेरे को नहीं मालूम था आज के दिन. एक कीवर्ड ही काफी है. सो नाउ बिकॉज इट इज गोइंग टू बी very fast streaming data on the network, Cloudera wants you to use memory channel. Okay, यहाँ पे नहीं दे रहा है ना इधर वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन. कहाँ दे रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स के फोकट ये क्या कर रहे हैं? ओके, ये अमेरिकन लुक है सारे. ओके, हर कंट्री में होते हैं. काम धंधा होता नहीं, पड़ जाते किसी न चीज के पीछे, जिससे उनको चार आना मिलने वाला है नहीं. See? Okay, let's go with this then. Memory channel. I'm not creating this, huh? I told you, I'm not creating this. Why? Because ये Cloudera का बनाया हुआ क्या है? jar file है, snapshot.jar. So ये automatic बनाएगा वो उसको. If it is not there, it will automatically create. Okay, that's the reason I didn't do it. Now it is a data stream. Right format is text. Okay, which means there can be multiple different formats, isn't it? Yes, there can be multiple different formats. तो अभी आजकल जो बहुत लेटेस्ट चल रहा है वो मार्केट में क्या चल रहा है पता है? कि डेटा काफका से आता है. अभी लगे हाथ बता देता हूँ. काफका से आता है, प्रेस्टो में चला जाता है. प्रेस्टो इज अ डेटाबेस. मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. डेवऑप्स को गायब कर दिया उन लोगों ने. तुमने काफका कॉन्फ़िगर किया, काफका से कूदू में चला गया, प्रेस्टो में चला गया, and it is done automatically. How it is done automatically, that is for later. But here we are still keeping 1000. छोटा छोटा है, roll count, roll size.
because this is on a RAM. That's the reason there is a word called roll size. Okay, so we want batch size 1000. जैसे count 1000 को हो गया तो वो क्या करेगा, एवरी दिस इंटरवल इट विल चेक 900 का जो सेकंड्स का इंटरवल है उस पर वो चेक करेगा और वो क्या करेगा, मेमोरी चैनल से उसको लिखना स्टार्ट कर देगा, इंस्टेंटली लिखेगा वो। ओके, लेकिन जब तक वो रैम पे फुल नहीं होता है, मतलब ये 1000 फुल नहीं होता है, तब तक वो लिखेगा नहीं जो तुमको देखने मिलेगा। डोंट वरी, समटाइम्स इट टेक्स 10 मिनट्स। दैट्स द रीजन मैंने ये हॉटस्टार यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अभी ये हॉट चल रहा है। अदरवाइज अगर तुमने कीवर्ड चेंज नहीं किया तो यू मे हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू सी द डिफरेंस। सो नाउ लेट्स कॉपी दिस। Okay, and come back to our file. Is that ready? अब एक क्वेश्चन है तुमको, वो क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू गेट दैट टोकन, एक्सेस टोकन, है ना? तो देखो एक चीज बताता हूं मैं तुमको, यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, दिख रहा है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स? यस। इन AWS, इफ यू वांट टू गिव समबडी प्रोग्रामेटिकल एक्सेस, क्या बोलते हैं उसको? प्रोग्रामेटिकल एक्सेस। In that case, we have to create a new access key over here. And the moment we create that, you give a programmatical access to somebody. Okay? तो ये शायद तुमको अगर पता है तो very nice. So let's go to apps dot, actually dev dot twitter.com. इसमें यार साइन इन करना एक बहुत बड़ा दुखद है। Okay, let's see this guy has got the account or not. अरे बाप रे, ये देखो ये सताएगा। ओके, भगा दो इसको। And let's log in with another user. John Bachi. Perfect. Okay, so let's go to, बहुत बदल गया यार ये, अमेजिंग, सुधर गया पहले से। काम करते हैं यार। We just send you a mail। अरे बाप रे, बहुत सता रहा है यार ये। ठीक है, डोंट वरी। इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन, टू गेट द की ना, एक्सेस की, कंज्यूमर की चाहिए ना अपने को, तो उसके लिए यू विल एक्चुअली नीड टू क्रिएट एन अकाउंट हियर। कम टू दिस developer.twitter.com। ओके, अब मेरे इसमें ये बोल रहा है मुझको वेरीफाई करने, तो मुझको तुझको एक्सेस दूंगा। तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पे मैं अटक गया हूँ, isn't it? Now the question is, I don't want to waste my time over here. You just have to remember कि once you verify your email and all that verification wala, you are good enough. You are good to go for the consumer key. See this one we are talking about. अब इसके अंदर ये मेरी स्क्रिप्ट में पुरानी स्क्रिप्ट डाली हुई है, पुरानी कंज्यूमर की वगैरह सब डाली हुई है। So I'm not worrying much about that. However, what we'll do is we'll quickly fire this, and अब मैंने जो ये कॉन्फ़िगरेशन में ये जो फाइल अभी इधर बनाया था ना, उसको मूव किया मैंने कॉन्फ फोल्डर में। ओके, एंड देन गो टू बिन, क्योंकि हमको एनजी फ्लूम एनजी यहीं मिलेगा ना। रिमेंबर दिस इज द सेकेंड agent which I am running. Okay, however, configuration folder is the same. Configuration file is this time changed, isn't it? And we are also saying कि मेरे को है ना तो स्क्रीन पे दिखा, क्या दिखा, कंसोल पे ये दिखा कि जब एजेंट ट्वीट्स लेके आएगा ना, आई वांट टू सी हाउ इट लुक्स लाइक। एंड दिस टाइम व्हाट इज द नेम ऑफ द एजेंट? -n, यहाँ लिखा है देखो, ट्विटर एजेंट, isn't it? Okay, so I'm copying this and running the agent. तो अब जैसे ही ये ट्वीट्स लाना शुरू कर देगा तो तुमको यहाँ पे स्क्रीन पे ट्वीट्स देखने को मिल रहा है। सी,
मतलब जितने भी फोकटिए जो ट्वीट कर रहे हैं एक दूसरे को फालतू में, वो सब यहाँ पे चालू हो गया, काम पे लगे हुए। मुझको पहला लगता था ट्विटर सब सेलिब्रिटीज के लिए है, अब तो ऐसे ऐसे चोमू लोग आ गए ट्विटर पे, माय गॉड, जिसको जिसको देखो भंगार वाड़ा बना के रखा है उसको। नाउ व्हाट विल डू इज विल गो टू चेक। अब मेरे दो एजेंट चालू हैं, याद रखना। Okay, because two agents, I will need the IP address. Where is the IP? Let's go to EC2. Five 0070. थोड़ा पहले से अच्छा चल रहा है अभी। See, user Ubuntu. See, Twitter का जो फोल्डर है मैंने बनाया नहीं था। I told you. So now here it is saying temp, TMP. इसका मतलब ये होता है कि जब तक वो 1000 का रोल काउंट होएगा नहीं ना, तब तक वो यहाँ पे डेटा को लिखेगा नहीं। अभी कहाँ लिखा हुआ है? रैम के ऊपर है। It is on the RAM. It is not going to write here unless and until रैम फुल नहीं होती। सो वेयर इज दैट? देखो दो दो एजेंट है, वन एजेंट इज हियर एंड द सेकेंड एजेंट इज हियर। ये चाइनीज में भी लोग ट्वीट मार रहे हैं, माय गॉड। Meanwhile, we will open a website that is JSON validator. अब ये ट्विटर का जो डेटा है ना, ये मैंने कॉपी किया थोड़ा सा। ओके, whatever we were able to capture, I don't know how much is that. Let's paste it here and validate JSON. अब थोड़ा ढंग का दिख रहा है ना? सी, या जस्ट इग्नोर दिस। नीचे का ये जो है ना, ये ऊपर देखो ये। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्विटर का जो डेटा है जो कंपनीज जमा करती है, तो करेगी कैसे? फायदा क्या उसका? व्हाट आर दे गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू रन अ sentimental analysis as well as politicians also, they use this information to find out कि where they have more potential. वोट एनालिसिस भी बोला जा सकता है। ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कैसा है। ओके, तो उसके लिए उनको ये डेटा एक टेबल में चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? और टेबल में डालने के लिए उनको डेटा का एक एनालिस्ट चाहिए जिसका ये काम है। सो लेट्स रिफ्रेश एंड सी क्या हो गया। सारे हॉटस्टार वाले किधर चले गए? सी, वी आर कैप्चरिंग ओनली सिंगल replication. Okay, now I'm going back to the Flume events. तो यहाँ पे तो अपने पास इवेंट्स है। लास्ट वाला जो डेट है, टाइम है, वो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 35, 36। अब लास्ट वाला ये 40 है ना? सो व्हाट विल डू इज विल पुश सम मोर। इसके ऊपर थोड़ा सा लोड और डालेंगे ना। ओके, sudo python रिफ्रेश करता हूं। माय गॉड, स्क्रॉल नहीं हो रहा वो इतना।
हियर सी, ये 40 के ऊपर आया 1103, isn't it? मतलब दोनों एजेंट चालू है, दोनों एजेंट अपना अपना डेटा ला रहे हैं. One agent is bringing data that is at rest, the other agent is bringing data which is in the motion. एंड ये माइक्रो इंस्टेंस है. बच्चे की जान लोगे, लेकिन अभी तक उसने कुछ चींचा कुछ किया क्या? कुछ बोला उसने कि मेरी तबीयत खराब है? कुछ नहीं बोला. दैट इज द पावर ऑफ लिनक्स. इसीलिए दुनिया को इतना पसंद है लिनक्स. मतलब हमारी दुनिया को पसंद है. ओके, नाउ ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया. अब हमको जो है ना डेटा, आज जो तुमने देखा है ना, सी व्हेन यू ब्रिंग डेटा फ्रॉम एन एप्लीकेशन, क्या बोलते हैं उसको? डेटा इंटीग्रेशन. व्हेन यू ब्रिंग अ डेटा फ्रॉम हार्ड ड्राइव, यू कॉल दैट, अभी ट्विटर का जो डेटा है ना वो इंटीग्रेशन है. लेकिन जो डेटा हमारे एप्लीकेशन से आया था, ओके, इवन दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. रिमेंबर दिस, यू आर इंटीग्रेटिंग दैट. नाउ देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंगिंग डेटा इंजेक्शन. उसके लिए क्या लगता है? उसके लिए लगता है डेटाबेस. क्या लगता है उसके लिए? डेटाबेस. तो उसके लिए हमको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? वी विल हैव टू क्रिएट द डेटाबेस. वी विल डू दिस टुमारो, डोंट वरी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कुछ लोगों के लिए. सो वी विल जस्ट फाइंड आउट वेदर Ubuntu, Twitter. Oh my God, क्या बात है, ट्विटर साले ठंडे पड़ गए सारे के सारे. सी, अपना रोल काउंट कम करना पड़ेगा 1000 से. मुझको लगा अभी तक लिख दिया होगा, बट इज स्टिल राइटिंग. इट इज फेचिंग डेटा. और कीवर्ड्स अगर तुमने वहां से उठाया ना डेटा, सॉरी गूगल ट्रेंड से, तो ये ऐसा भागता है. ओ माय गॉड, यू कांट इवन सी व्हाट इज रिटन. इट रन्स लाइक एनीथिंग, फुल स्पीड में जाता है. ये तो हमने जब काम के कीवर्ड्स डाले हुए, एक ही है वो बकवास जो हॉटस्टार है, बाकी तो सब काम के कीवर्ड्स है ना हमारे डेटा साइंस. तो इसके लिए इतना स्लो है ये. सो लेट मी रिफ्रेश एंड सी. सो जैसे ये हो जाएगा तो यहाँ पे जो जीरो है ना, दिस विल बी विथ सम साइज. दैट्स ओनली डिफरेंस यू विल गेट टू सी. एंड द टेम्प इज, इट इज स्टिल फेचिंग डेटा. तो जब तक रैम पे है तब तक टेम्प है. एंड देन जो जो बंदे इसके ऊपर काम करते हैं ना, उनका काम होता है कि वो जेसॉन की जो, अब एक्चुअली तुम लोगों को मैंने वो बताया नहीं है डेटाबेस का, अभी हमने सेशन किया नहीं, कल करेंगे, डोंट वरी. बट दैट, बिफोर वी गो अहेड विद दैट सेशन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा. इन एवरी डेटा देयर इज सम, इन डेटाबेस एक्चुअली देयर इज अ स्कीमा. लेकिन यहाँ पे भी है ना एक स्कीमा है जो तुमको, अगर तुम देखो ध्यान से, तो इसके अंदर एक स्कीमा है, लाइक नेम, सी, लाइक आईडी, लाइक सिंबल्स, इजंट इट? तो इसमें हमारा जो काम के स्कीमा है वो हम उठाएंगे, उसको डेटाबेस में डाल देंगे. तो वो जो डेटाबेस यूजुअली कंपनीज यूज करती है, दैट इज कूडू, KUDU, और प्रेस्टो. ऑफ कोर्स दे कैन यूज एनी अदर डेटाबेसेस, बट दैट इज देयर फेवरेट. Schema is equal to table, yes, it is. So you are asking, but डेटाबेस की भाषा में उसको टेबल बोल सकते हो तुम. एंड दैट स्कीमा एक्चुअली डिसाइड्स कि तुम्हारा जो डेटा है उसको कैसे क्वेरी करेंगे, बिकॉज वी अल्टीमेटली वांट एन एसक्यूएल टू बी रन, एसक्यूएल टू रन ऑन दैट डेटा. चलो ये आ गया, देखो 7.93 MB दिख रहा है. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, ये फाइल माइक्रो इंस्टेंस के लिए बहुत हैवी है, ऑनेस्टली. Oh, let's take the IP address from here quickly and get our job done. Oh,
हियर इट इज. चलो अच्छा है, छोटा सा चंक है ये. सो लेट्स JSON validator. देखते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है वैसे तो. सो हमारे जो हदूप की दुनिया का जो टूल है ना, दैट इज मच बेटर देन दिस. बट फिर भी ये इसने जेसॉन का फॉर्मेट तुमको बता दिया कि दिस इज हाउ इट looks like, isn't it? Otherwise, we cannot understand this garbage. See? तो उसके लिए क्या लगेंगे, और टूल्स लगेंगे, जैसे कि गुआवा, जैसे कि एवरो. एवरो इज वेरी फेमस. अपाची एवरो. What these tools do, they actually take this data, they automatically find out the schema and they automatically put that into a table. वो काम हमारा नहीं है, don't worry about that. But this is how it is happening. ये हमको याद रहना है, बस that's it. Okay, now it is, see my agents are still running. See, अब मैं मेरे एजेंट को स्टॉप कर देता हूँ. ओके, एक को स्टॉप किया, ये दूसरा भी एजेंट मैंने स्टॉप किया. नाउ द क्वेश्चन इज, आई एम रनिंग दिस एजेंट वंस अगेन. विच एजेंट? अपना इंटरनल वाला. तो जिनको पता है कि ये मैं रन क्यों कर रहा हूँ वापस से, बिकॉज रिमेंबर दैट फाइल जिसमें मैंने कमेंट किया था, isn't it? So I'm running this agent once again. And because I'm running this once again, I will push this once again. And let's go back to Flume and events. Last time हमने क्या देखा था? 11:03. 11:06. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन बनेगा जब मैं तुमको दिखा दूंगा उसके बाद. 05:06, ये 11:11. सी, ये अभी का है ना, अभी का है. तो क्वेश्चन ये है कि उसमें मैंने कमेंट किया है, फिर भी ये ऐसा क्यों चल रहा है? नहीं चलना चाहिए इसको एक्चुअली. तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, क्लस्टर को स्टॉप नहीं किया भैया. तो ये तुम्हारा होमवर्क है. what you will do is you will stop the cluster and start the cluster. This will not work. Okay, so आज के लिए इतना काफी है, and wish you all the best. Take care. बाकी का इकोसिस्टम कल निपटेंगे.